students and scholars, teachers and trainers, professors and professionals, watching, listening from the field of arts, commerce and engineering, the most honorable President Prime Minister Narendra Modi ji, respected ministers and doctors, honorable advocates, advertisers, administrators, and I, Dr. RK from USA, you are listening and watching the truth of science and spirituality from language to literature. Dear friends, today, now and here, it is very nice time, nice place, nice section that we are placing our defense services. Our India, which is being protected by the soldiers, by the thought of our scholars and learners. Dear friends, our own forces in India, bottom to top, root to fruit, first and last, they are spending their time in protecting our motherland by being nationalistic and patriotistic, for providing the energy, speed, stamina, endurance to our nation. It is really notable, recordable. Our scholars and learners, those who are watching, India and abroad, as well those who are busy in doing research from Harvard, Oxford, Edinburgh, Pennsylvania, from the different universities. Dear friends, what is the true title and topic of the research? That is the research on our soul by being patriotistic and nationalistic through devotion and dedication. Our own soldiers and officers, commanding officers in Air Force, NDA, Navy, they are dedicating and devoting themselves while expressing their talent, their skills. And yesterday you have seen how our India had celebrated Indian Air Force Day. It is the remarkable and outstanding step that should be kept on for showing the bravery, courage, boldness of our Indian Air Force, and in all the different sectors of defense. This should be provided for making them realize what energy and potential, dynamic energy they have, muscle power that will be used for the protection and preservation of our national heritage and national boundaries at the national and international, even at world level. It is very necessary if we want to have peace, then we must prepare ourselves for war.
It is rightly said by the great men, but today in this present time, we are observing and examining that we are to be ready to face different worldly changes for the protection and preservation of our holy motherland. Dear friends, every country, every soldier of every nation, they protect their nation by their potential and energy, by their availabilities of task force and defense. In Navy, NDA and even in Army, we see that these are the essential part and parcel of our country. Dear friends, Air Force works like an air, which is a part of nature. It is not a common thing, it is not an easy task, but it is the work of warriors. How do they play in the air? It is to be seen by every player and sportsman, all game players and sportsmen, those who are preparing themselves along with their study. They must be physically fit and fine by maintaining their daily routine. How is their daily routine? What do they take in their diet? Their every movement does matter. As in our human body, we know that our heart and mind make compromission in the presence of air. Inside our human body, if we feel the presence of air, fire, soil, sky and water, all these elements are inside the human body, and all these informations are reported to our mind. How do we observe it inside the body? Our sportsmen, those who do yoga, pranayam, meditation daily, definitely they know how the different forces work for the protection and preservation of our human body from the external disease. It should be learned. It is being learned by our scholars, sportsmen, students, all persons and professionals of our nation. Like in Israel, that country has the least population, but every man's working style is like an army man. So it should be adopted by our Indian. Every common citizen, while doing any kind of work, their working style in the different professions should be like an army man, like the soldier.
There is a poem which expresses such thoughts written by Rupert Brooke, who born in 1887. Dear friends, you study in history that in 1857 it was the time of the first battle against English people in India for abolishing and uprooting the empire of English people. Later, in 1885, it was the establishment of Congress. There came subsequent changes by starting a different movements, by bringing revolution in agriculture, industry, telecom sector, in means of communication, transportation, in the different sectors of health, post offices, railways. These sectors were totally influenced year by year, decade by decade. Later on, there was the starting of First World War in 1914. The background was prepared by our revolutionaries, starters, beginners and initiators of the freedom and free thinking. At that time, from 1887 to 1915, we read in English literature Rupert Brooke, who born in 1887 and died in 1915. How has he presented his ideas, thoughts about the soldier for preparing themselves for fighting their nationalistic and patriotic feelings. This poem was written by Rupert Brooke for recreation, reoperation, regeneration in their country people. How had he started this poem? If I should die, think only this of me, that there is some corner of a foreign field that is forever England. There shall be in that rich earth a richer dust concealed, a dust whom England bore, shaped, made aware, grave, gave once her flowers to love, her ways to roam, a body of England breathing English air, washed by the rivers, blessed by sons of home, and think this heart all evil shed away, a pulse in the eternal mind, no less, give somewhere back the thoughts by England given, her sights and sounds, dreams happy as her laughter, learnt of friends and gentleness, in hearts at peace under an English heaven. Dear friends, you are listening, watching very carefully how we can regenerate, create, reform our Indian society and nation. Every person's cooperation, participation is equally important today. Rupert Brooke from 1887 to 1915
was the son of a house master of rugby, where he had his schooling. He took a degree in the classics from Cambridge in 1909. He began to write poetry while at rugby. His first volume of verse was published in 1911. After a short trip to Germany, where he wrote his famous Grantchester. Dear friends, in Indian history we study that what happened in 1911. Our Gurudev, Rabindranath Tagore, who got Nobel Prize, and he is known as the first Nobel Prize winner of India. Traveled through the USA in 1913. Who? Rupert Brooke. Here we are talking about Rupert Brooke, who traveled through the USA in 1913, going as far as the South Pacific Islands. When the war broke out, he took part in the unsuccessful defense of Antwerp, and early in 1915 was sent to the Mediterranean. He had joined the Royal Navy. He died April 23, 1915 of a septic infection of the lip on the Greek island of Skyros. He was buried at the island of Skyros. His poems appeared in 1911 and 1914, and other poems in 1915. Though the volume of his poetry is comparatively very small, his youthful freshness and untimely death caused him to be read very in the years between the two world wars. His collected poems 1918, including the 1914 group of sonnets published in 1915, show that he was a poet of exceptional promise. His letters from America appeared in 1916 with an introduction by Henry James. Dear friends, you are listening his personal autobiography. How he was influenced initially by the thoughts and ideas of bravery, and how has he brought changes in his working style. These should be recorded and notable, knowledgeable, informative and instructive for our all English scholars, those who are preparing their NET and SLAT examination, for knowing entirely bottom to top, root to fruit. The poem entitled "The Soldier" is a sonnet. One of the characteristics of a sonnet is that it should make clear one great thought. In this sonnet, the thought is that wherever a man who dies for England is buried, that spot is forever a part of England. The same idea is repeated in the poem again and again.
The sonnet thus expressed an English soldier's patriotism and his fervent love for his country. Rupert Brooke was buried in a foreign land on the Greek island of Skyros. J.H. Fowler comments, no verse gave finer expression than this sonnet to that wonderful mood of impatient exaltation in which the young Englishman of 1914 met the sudden call for patriotic self-surrender. The poet thinks of himself as a part of his country. So wherever he is buried, that place would become England. Because his is England dust. His dead body is a rich dust of England. He was born and brought up in England. He had roamed about on English soil, breathing English air. His thoughts, his dreams, all were English. After his death, he inspires patriotic feelings in the hearts of his countrymen. This is the beginning of the poem by Rupert Brooke. He has expressed an English soldier's patriotism and his fervent love for his country. The poet thinks of himself as a part of England because his body, mind and spirit are made of English soil and climate and thoughts. He was born in England. He was brought up in England, loving her flowers. Breathing English air, drinking water of English river, and enjoying himself in English sunshine. He considers his dust richer than the dust of the land where he may die. The poet says that whatever he is buried, that place would become England because it is English dust. How critically analyzed here? Rupert Brooke had joined the British Navy in 1914. He fought at Antwerp, sailed for East in February and died 2 months later. On active service at Skyros, living for his epitaph, the following lines: if I should die, think only this of me, that is some corner of the cornfield, that is forever England. If I should die, if I should die, think only this of me, that there is some corner of the cornfield, that is forever England. And poet could live for these lines alone. They went home to the heart of England and English people.
Further, he analyzed that soldiers and English soldiers' patriotism and his fervent love for his country. Rupert Brooke thinks of himself as a part of his country. So wherever he is buried, that place would become England. Because his is English dust. Here the poet again tells his countrymen what they should think of him. If he dies in a cornfield, he says that after his all evil in him will disappear, and he will become a part and parcel of the eternal mind in the condition. In this condition, also he will inspire in the hearts of the countrymen thoughts of love for the motherland. He will remain forever a source of inspiration to the English people. He will make their hearts truly characteristic of English society and an English home. The juxtaposition of the words peace and English recall to our mind the following stanza in the Tennyson's Palace of Art. And one an English home, great delight poured on dew pastures, dewy pastures, dewy trees, so densely all things in order stored, in of ancient peace. Dear friends, Rupert Brooke is remembered mainly as a war poet and is closely identified with the ideas and thoughts related to the commencement of the First World War. The beginning of the 20th century witnessed a disillusionment with imperialism and a growing tendency among us liberal thinkers to denounce it. It was also a period of low self-esteem on part of the British. Thus when the war broke out in 1914, many people welcomed it as a necessary crisis, activate and remotivate national life and provide it with a direction. The soldier was composed at this. The soldier was composed at this time. The soldier is one of the 5 sonnets which Rupert Brooke wrote and which were published as the 1914 sonnet in December 1914 in New Numbers. It was commented upon by Dean Inge, who viewed it as the enthusiasm of a pure and elevated patriotism. It is in the tradition of other patriotic poems like Tennyson's Blow, Bugle Blow and the Charge of the Light Brigade. No verse gave finer expression than this sonnet to that wonderful mood of impatient exaltation in which the young Englishman of 1940 met the sudden call for patriotic self-surrender. Shortly afterwards, the poet's untimely death deeply touched the imagination of his fellow countrymen. The nation recognized that in his last verses
He had placed himself by the side of Keats. Of all English poets, of one remembered most fondly for early achievement and unfulfilled renown. The soldier is the noblest and most famous of Brooke's sonnets. It breathes, it breathes a robust spirit of intense patriotism. The poet completely identifies himself with his country. The poem beautifully expressing an English soldier's proud patriotism serves as an epitaph for the past for the poet himself. Because he died away from home, fighting for his country, this sonnet seems to be his epitaph. It reveals the poet's deep feeling of patriotism. He expresses his deepest sentiment of love for his motherland. It is a touching sonnet. It has a sincere appeal. It was inspired by the first World War. Brooke, who was a soldier, was not a narrow-minded patriotic. This sonnet expresses a conception of patriotism which has nothing to do with aggressive nationalism. The poem as a sonnet. The poem entitled The Soldier is a sonnet, and one of the characteristics of a sonnet is that it should make clear one great thought. In this sonnet, the thought is that wherever a man who dies for England is buried, that spot is forever a part of England. The same idea is repeated in the poem. If I should die, think only this of me, that there is some corner of a cornfield that is forever England. There shall be in that rich earth a richer dust concealed, a dust whom England bore, shaped, made aware, gave once her flowers to love, her ways to roam, a body of England breathing English air, a body of England breathing English air. Brooke's war poetry. When the war broke out, many people welcomed it as a necessary crisis which would reactivate and remotivate national life. But this was not really and the ugly and painful side of the war soon came to the forefront, as is reflected in the works of writers like Wilfred Owen, Siegfried Sassoon and Edmund Blunden. Brooke, however, did not live long enough to see this, as he died in 1915 before seeing actual action. Brooke as a poet, his contribution to poetry. Brooke wrote both poetry and prose. He also wrote some criticism and drama. He was a man with serious political and social interest, but in association with the rising patriotic fervor of the 1914 and then his early death in 1915 resulted in excessive praise of his war poetry, which overshadowed the rest of his work. The poetry of Rupert Brooke is a poetry of youth and romance. Not the romance of the distant, the bizarre, the remote, but the romance of the actual and its adventurous discovery. No characteristic of Brooke's poetry is more marked
than its valiant and happy youthfulness, tinged and note infrequently with that susceptible irony and half-affected cynicism, not less indicative of the young man's uncertainty both of life and himself, lacking depth, originality, and direction of thought, yet he had the gush and ardor, the sweep and the rush for a poetic soul, and the gift of relating everything he saw to an essentially youthful standpoint, which is the most remarkable feature of his work. His poetry is the expression of self-examination, and his verse is only a triumph of the intellectual imagination. The theme of his poetry is the life of the mind, the senses, the life here and now. It is life he loves, and not in any abstract sense, but all the little infinite familiar details of life remembered and catalogued with delightful jest. Dear friends, you are listening. What are the main characteristics of Brooke's poetry? Especially, the main characteristic of Rupert Brooke's poetry is the realistic thought. As you have heard G.B. Shaw, George Bernard Shaw's Arms and the Man, likely that Rupert Brooke has presented such warlike ideas and thoughts he shares with all the contemporary poets. His themes deal with the most commonplace facts of life. He combined fancy with reality. It is this. Above all that, his poetry signifies a rich and exuberant life, keenly conscious of life and fully aware of the realities by which it is surrounded. The essence of Brooke's poetry is false. His imagination is robust and penetrating. He is not afraid of writing about even the most disgusting objects. He is full of youthful enthusiasm. He experiences the very thrill of life, and some of it pulsates through his poetry. His words stand out sharp and distinct, like the tower under the light and blue world as hidden and like the fabric of a vision bathed in an unearthly atmosphere. He deserved, loved and praised things in themselves for their energy. All activity and apprehensiveness, his imagination, lyrical gift throws a halo of human object. To him a fresh simplicity comes naturally, which others in this modern army, Air Force, NDA and Navy, his thoughts and ideas should be made to keep in their minds by our own holy rulers of this holy, for the respect of this holy land. They must devotion, dedication towards this country. This motherland is really respectable
in the world. This is the Indian motherland. For it, everyone is our daily life, our daily routine should be started by welcoming our defense forces externally and internally as we pray to Lord for maintaining peace all over the world. This is the true aim of our defense forces. All the soldiers of Air Force, NDA, Navy and Army, their chief aim is to maintain the peace and prosperity in our nation. So for that, they should do hard work physically, mentally, emotionally, sensually and even spiritually. Every country, people of our nation should also perform and should be busy in performing their profession with full of devotion and dedication like an army man. So their working style should be like a warrior as per the thoughts of our great men, freedom fighters, free thinkers, those who came first, those who got birth on this holy land. So it is our first duty to preserve and protect our nation from the enemies. Likely that we are to escape, we are to save, emancipate our soul from anger, falsification, lust, ego, variousness, false notion, false thoughts, negativities. These are the enemies of our soul. In the bodily motherland, this body with every individual, every human being is the form of motherland. So this human body should be protected from different type of social evils, disease, weaknesses, shortcomings, frustrations, depressions, and it should be filled with true nationalistic and patriotistic feelings in every part of our internal organ that should appeal for its true devotion and dedication towards humanity. Humanity is our religion and humanity is our caste. This should be our every person's aim for maintaining sympathy, compassion, brotherhood, love each other. These are the true ornaments and these are the true ornaments that should be worn by every person of our holy motherland for making our life prosperous and peaceful. This is the true aim of our life. This is the true aim of our defense, to maintain the peace and prosperity, to maintain the discipline, for obeying this holy motherland in the presence of our holy rulers, our present Prime Minister Narendra Modi ji, who is efforting well for bringing a revolution in the information technology by starting 5G on 1st of October. It is a great initiative. Thereby our India will be the leader of the world. Dear friends, in all our holy Indian sectors,
like agriculture, industry, transportation, communication, post offices, railways, defense, entertainment industry. All these are being turned as a place of entertainment and tourism. One day India will be the place of tourism. Definitely, because the efforts and endeavors of our present Prime Minister are turning our nation by providing the neat and clean society with the great high thoughts, high ideals for this nation. In our railways, we see that he has brought many changes. There is not the time away from us when there will be the technology and digitology. We will see even inside the train, metro, which was initiated and inaugurated by our present Prime Minister, that is not the journey of less than an aeroplane, because for traveling peacefully it will provide a safety, security, cleanliness, away from disturbances, and every person who is working dedicatedly and devotedly for the nation, he can perform very well. So these are the great initiatives that are being taken by our present Prime Minister in the sector of communication, transportation, and these technologies in future will be provided even in the hospitals, education, banking. How our services will be provided to the service takers. This will be a great initiative by the changing scenario of the age. We see that आजादी का अमृत महोत्सव 75 साल का समय आज भारत को आजादी मिले हुआ, जिससे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारा भारत 100 वर्ष के बाद में कहां खड़ा होगा, इसकी कल्पना के तहत अनेकों कार्यक्रम, अनेकों प्रयास जारी हैं और ऐसे भविष्य की कल्पना जिसके अंदर भारत हर क्षेत्र में दुनिया का लीडर बनकर उभरेगा, ऐसे समय की कल्पना करना इन चुनौतियों भरे समय में बहुत बड़ी सोच, बहुत बड़े विचारों का परिणाम, क्योंकि हमारे भारत की संस्कृति, भारत का महान वेदांत दर्शन हमें सिखाता है, हमें बताता है कि हमने अभावों के अंदर प्रभावों में जीना सीखा है। कैसे भारत कबाड़ से जुगाड़ की ओर चला जाता है, किस तरह से भारत के लोग हर स्तर पर, हर प्लेटफॉर्म पर अग्रणी भूमिका निभाते हैं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि हमारे महान समाज सुधारक जो इस धरती पे आए, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत में लड़ा गया, जिसकी बहुत सी कमियां रही कि ये सफल नहीं हुआ, तो इसी ने ही स्वामी विवेकानंद को इस भारत की धरती के ऊपर पैदा किया और 1893 में अमेरिका में जाकर विश्ववासियों को विश्व बंधुत्व का संदेश देते हुए
भारत की राष्ट्रीयता और संस्कृति का प्रचार करने के लिए पूरा का पूरा जीवन न्यौछावर किया और संन्यास का जीवन जिया। वो महान महापुरुष जब भी कोई उनके शब्दों की बात करता है, उनकी सोच की बात करता है, तो वो एक नई ऊर्जा के साथ भर जाता है, नए तेज के साथ भर जाता है। उसका ब्रह्म उसमें फिर से पुनर्जीवित हो उठता है और पुनर्जीवित होने के बाद वो अपनी रक्षा खुद करता है। जैसे ये आत्मा की रक्षा करने के लिए अनेकों अनेक शब्दों का प्रयोग, वाणी का प्रयोग, विचारों का प्रयोग अलग अलग धर्मों में किया जाता है, ऐसे ही हमने अपने इन वेदांता के रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया। स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा, क्या लिखा उन्होंने अपने विचारों में? भाइयों बहनों, ये खुद के शब्द उनके कहे गए अमेरिका में ऐसा जोश भर देने वाले और जोश में होश को लाने वाले शब्द थे, जिन्होंने पूरे विश्व को बता दिया ये भारत की भूमि ऐसी पवित्रता की भूमि है। सफलता का अभिप्राय भारतवासियों के लिए नियमितता और लगातार बने रहना है, अथक प्रयास करना, अटूट लगन और लगाव से लगे रहना, ये भारतवासियों की पहचान जो कि आज तक अक्षुण्ण बनी हुई है। और इसी पहचान को बनाए रखने के लिए, विश्व स्तर पे ले जाने के लिए हमारे सभी समाज सुधार कार्यरत थे, प्रयासरत थे। और आज वर्तमान में हमारे शासक प्रशासक महोदय हमारे देश की पवित्रता को, इस मातृभूमि की पवित्रता को और महानता लाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। तो भाइयों बहनों, ये हर नागरिक का, भारतवासी का कर्तव्य बनता है कि वो अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने भारतीय संस्कृति विरासत को समाये रखने के लिए, इसमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए, नवीनता और प्राचीनता में सामंजस्य लाने के लिए कटिबद्ध रहे, वचनबद्ध रहे और अनेकानेक जो रिश्ते वफादारी के, वो जो रिश्ते वफादारी के हमारे महापुरुषों ने हमारे अंदर कायम किए हैं, उनको बरकरार रखने के लिए हमें अपने भूतकाल को, अपने अतीत को नहीं भूलना है। और जो आधुनिक समय में चाहे कितने भी जी क्यों ना जाए, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G, 8G, 9G, 10G, क्योंकि ये सभी के सभी जी मनुष्य के दिमाग के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं और मनुष्य के दिमाग की शक्ति इससे भी करोड़ों अरबों खरबों गुना ज्यादा है, जो हमारे संत महापुरुषों ने बताई है। इसलिए ये विज्ञान उस महाविज्ञान का मुकाबला कहीं नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो बात करोड़ों अरबों खरबों साल पहले हमारे महापुरुषों ने लिखी थी। जब से ये सूरज, चांद, सितारे, धरती, आसमान बने हैं, तभी से ही ऐसा सच, ऐसे सच को उनके धार्मिक महाग्रंथ, महापवित्र ग्रंथ आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं। तो इनसे नहीं घबराया जा सकता। ये छोटी छोटी समस्याएं, ये छोटी छोटी उपलब्धियां उन बड़ी बड़ी उपलब्धियों को छोटा नहीं कर सकती, उनका मूल्यांकन हम कम नहीं कर सकते, बल्कि उनकी महत्ता और भी बढ़ जाती है, जिनके सहारे आज हम इस आधुनिक टेक्नोलॉजी का, आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। तो भाइयों बहनों, समाज में हमारे हर भारतवासी को, चाहे वो बुढ़ा है, बुजुर्ग है, बहन है, भाई है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, नौजवान है, बीमार है, लाचार है, बेसहारा है, प्रभु ने हर किसी के अंदर अनमोल खजाना श्वासों का दिया है। और इस मनुष्य जीवन के अंदर जो करने का काम है वो भी समझाया है। तो हमें उस काम को असली समझते हुए ये सब चीजों को साधन मानना है और मोक्ष की प्राप्ति को साध्य मानना है कि हमने मोक्ष प्राप्त कर भी लिया है, निजात हासिल कर भी ली है,
उसके बावजूद भी हमें डटे रहना, बने रहना, लगातार प्रयास करते रहना, यही एक मनुष्य जीवन का संघर्ष का संदेश हमारे महापुरुषों ने हमें दिया है, जिसे बनाए रखना हमारे हर भारतवासी का ही नहीं बल्कि भारत का प्रत्येक नागरिक जो अनेक सीमाओं की रक्षा कर रहा है, अनेक क्षेत्रों में रक्षा कर रहा है, उसका तो इससे भी ज्यादा बड़ा फर्ज बनता है कि वो अपने अंदर पवित्रता लाए और भारत की आन बान शान की रक्षा के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहे। और इसके अलावा अगर वो कर सकता है तो तन मन धन से कुर्बानी करने के लिए तैयार रहे, क्योंकि ये हमारा सभी धर्मों का जो ज्ञान है वो इस बात पे आधारित है कि बिना कुर्बानी के कहीं किसी को कुछ नहीं मिला। कुर्बानियां करना, शहीदी पाना, महाशहीद हो जाना, ये भारत के लोगों के खेल रहे हैं। तो ऐसे खेलों पे खेलते हुए यदि हम विज्ञान के हाथ नहीं बिकेंगे तो हमारा महाविज्ञान बना रहेगा और हमारी मनुष्यता कायम रहेगी दुनिया के अंदर। दुनिया के अंदर सांस्कृतिक सामाजिक मूल्यों का उत्थान रह रहकर फिर से होता ही रहेगा। तो भाइयों बहनों, हमें अपने अतीत को नहीं भूलना है, क्योंकि वो हमारी एक महान सांस्कृतिक विरासत है जो हमें महापुरुषों ने अपने आन बान शान को मिटाकर तन मन धन को समर्पित करते हुए प्रदान की थी। हम आज उन्हीं के ऊपर सांसें ले रहे हैं, आजादी की सांस ले रहे हैं, आजाद और आत्मनिर्भर भारत की कल्पना कर रहे हैं। आज हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो सपने दुनिया के अंदर जगाए जा रहे हैं, जिसके लिए हर कोई संघर्षशील है, तो भाइयों बहनों, हर नागरिक का ये फर्ज बनता है कि वो भारत की ये जो संपत्तियां, जो सांस्कृतिक विरासत उसने प्राप्त की है, वो इसका ऋणी है और उसे चुकाने के लिए प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करे, ताकि वो उसके अंदर, उसकी आत्मा में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मन में विषय विकारों की बदबू न आए, गंदगी न फैले, बल्कि इसमें महान उच्च स्तर के संस्कारों की और ज्यादा खुशबू भर जानी चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो वर्तमान है वो पास्ट पे आधारित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा, आवर प्रेजेंट लाइज इन द पास्ट। जो भी कुछ आज हम वर्तमान में देख रहे हैं, ये सब हमारे पास्ट की देन है। भूतकाल हमारा अनुभव है, भूतकाल हमारा गुरु है। ये है भारत देश की असली पहचान, जिसे स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया में बताया कि अनरेड, अनस्पोकन, अनहर्ड, अनलिसन, अनसंग, ये है हमारे गुरु। और इससे भी बड़ा गुरु हमारा रिटर्न। इस रिटर्न की बात स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में की और कहा, आह्वान किया, रिटर्न टू द वेदास, रिटर्न टू द नेचर, रिटर्न टू योर पास्ट, रिटर्न टू योर चाइल्डहुड। ये रिटर्निंग जो है भारत की, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विश्व में आजादी का परचम लहराने वाली, बहुत बड़ा संदेश लेके आने वाली होगी। क्योंकि भारत चाहे अनेकों क्षेत्रों में विकासशील देश क्यों ना हो, लेकिन अपने सांस्कृतिक मूल्यों में, सामाजिक उत्थान में पूरे विश्व का नेतृत्व करने वाला देश, एकमात्र देश ऐसा होगा यदि हमारा प्रत्येक भारतवासी इसके समर्पण और त्याग को जान जाएगा, इसके बलिदान की कहानियां पढ़ेगा, जिसके बारे में हमारे महापुरुषों ने लिखा, जननी जने तो भक्त जन, कह दाता कह सूर, नहीं तो जननी बाज रहे, काहे गवावे नूर। भाइयों बहनों, ये अनेक महापुरुषों की धरती, समाज सुधारकों की धरती, ऋषियों मुनियों की धरती, बलिदानियों, त्यागियों, तपस्वियों की धरती है। इस धरा के ऊपर भोगी विलासी लोगों का टिकना बड़ा ही मुश्किल रहा है। थोड़े टाइम तक आते हैं आक्रमणकारी, इस पे आक्रमण से पा करके ठंडे हो जाते हैं, फिर ये अपने आगोश में समा लेती है ये भूमि। ये भारत की भूमि ऐसी महान भूमि है जिसने सबका सत्कार किया, सबका रेस्पेक्ट किया है, और ऐसे ऐसे महापुरुषों को जन्मी है ये मातृभूमि
जो कि धर्मों के स्टार्टर हुए श्री गुरु नानक देव जी महाराज 1469 में जिनका जन्म हुआ। वास्को डिगामा पहली बार भारत में आए। भारत तो पहले भी था, लेकिन उन्होंने खोज की, पता लगा उनको 1498 में। कुछ समय के बाद हम पढ़ते हैं उन्हीं के अंग्रेजों में, इंग्लिश पीपल में 1564 में 1564 में विलियम शेक्सपियर का बर्थ हो जाता है। और उन्हीं के थोड़े ही समय बाद, मतलब कुछ डिकेड का टाइम लेने के बाद में हम पढ़ते हैं 1600 शताब्दी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड की कंपनी भारत के दिल्ली के अंदर प्रवेश कर जाती है और भारत को अनेक ज्ञान का खजाना, सूचनाओं का केंद्र भारत बन जाता है। भारत अनेक जानकारियों का स्थान। 15वीं और 16वीं शताब्दी की बातें हैं प्यारे भाइयों बहनों। पढ़िए इतिहास, जानिए कैसा महान इतिहास, कैसा सुनहरी इतिहास हमारे महापुरुषों ने दिया है। जब हम इसको जानेंगे तो हम पाएंगे कि कर्मोन्नत उन्होंने, अंग्रेजों ने हमें हमारी आत्मा की और सच्चाइयों के बारे में, इस मनुष्य जीवन की और भी गहराइयों के बारे में और इस आत्मबल की ऊंचाइयों की सराहना के बारे में अनेक प्रयास किए हैं। और उन्होंने बताया भी है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। हमने भारतवासियों ने बहुत कुछ उनसे सीखा है, लेकिन अब समय है हमारे इस आजाद भारत में हमारे को अपनी आत्मिक आजादी को पूरे विश्व के ऊपर दिखाने का, कि चाहे हमें कालखंड में, भूतकाल के लंबे कालखंड में अधीन रहे, गुलाम रहे, गुलामी करते रहे, दास्ता के जीवन में जिए, परंतु आज हमें आत्मनिर्भर और आजाद भारत का सपना लेकर पूरे विश्व के सामने इस कार्यक्रमों को, ये जो इनिशिएटिव हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिए जा रहे हैं, पूरे दुनिया को दिखाने का बहुत ही सुनहरी अवसर है कि हमारे युवाओं की शक्ति, युवाओं की गतिशीलता कितनी महान होगी पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया को बदल सकने की शक्ति इस भारत देश के सामर्थ्य के अंदर है। वैसी सामर्थ्य शक्तिवान भारत की खोज आज आधुनिक भारत में हमारे अनेक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के महापुरुषों के द्वारा की गई, लेकिन उसका क्रियान्वयन रूप हम देख रहे हैं आज मोदी जी के रूप में, जिन्होंने महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए अनेक समाज सुधार के कार्यों को भारत में शुरू किया है। भारत की सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए, भारत के राजनीतिक प्रदूषण को मिटाने के लिए, भारत के आर्थिक भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, भारत के अनेक सुधार संशोधन करने के लिए हमारे जो ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, ये हमारी रक्षा ही नहीं करेंगे, बल्कि हमारे भारत को अंदर से मजबूती भी प्रदान करेंगे। हमारी भारत की भूमि, वो जिसे दीमक लग चुकी थी, जो भारत की संस्कृति खोखली हो चुकी थी, उसके अंदर फिर से एक निग्रता लाने के लिए, उसको फिर से मजबूत बनाने के लिए ये 5G हमारा काम करेगा। और जब हमारा प्रत्येक युवा स्वस्थ होगा, स्टैमिना होगा, एंडोरेंस होगी, स्पीड होगी, तो देखिए भारत सूचना में, जानकारी में और भी उच्च स्तर पर जाएगा और पूरी दुनिया को चुनौती नहीं देगा, बल्कि उनमें सुधार लाएगा और बताएगा कि यदि पूरी विश्व के अंदर उसका एक नयापन, एक नवीनता, एक पुनर्स्थापन लाने वाला अगर कोई देश है तो ये भारत के अनेक पर्यटन स्थल होंगे, ये धार्मिक स्थल होंगे, जो बताएंगे पूरे विश्व को, दिखाएंगे पूरे विश्व को कि हमारे भारत की भूमि में अनेक ऐसे सेलेशियल बॉडीज, सूरज, चांद, सितारे, जिनके साथ जीने वाले हैं हमारे वो भारतवासी, जिनकी संज्ञा, जिनका संकल्प, जिनका अभिमान, जिनकी सोच आसमान की ऊंचाइयों से भी ऊंची है, जिनकी गहराइयां समुद्र की गहराइयों से भी गहरी हैं। ऐसा भारत देश जिसका विस्तार पूरी दुनिया के भौगोलिक क्षेत्र ज्यादा विस्तार है, इसका विस्तारण तो भारतीय भाइयों बहनों
हमें अपने देश की रक्षा के लिए, इसके साथ साथ अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी आत्मा को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मन में अभिषेकरण से बचाने के लिए हमें जो प्रभु के शब्द भजन सुमन में मिले हैं, वो हमारे सभी व्यवसायियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक नवीन क्रांति का काम करेंगे। कोई ऐसा नहीं हुआ महापुरुष, कोई ऐसा मनुष्य दुनिया में नहीं आया जिससे ये मनुष्य शरीर में एक बार भी गलती, तो घबराने की जरूरत नहीं है भाइयों बहनों, बल्कि इन गलतियों के ऊपर भी, बुराइयों के ऊपर भी, कमियों के ऊपर, कमजोरियों के ऊपर विजय हासिल करना, ये हमारे भारत देश की संस्कृति का मूल आधार है। आप देखेंगे आज भी हमारे शासक प्रशासक महोदय, उनके अंदर जब आप जीवन शैली को पढ़ेंगे, आत्मकथाओं को पढ़ेंगे, तो पाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने अनेक युद्ध लड़े, संघर्ष किए, और संघर्ष करने के बाद में, जीतने के बाद भी उन्होंने अपने आप को ऐसे मिटा दिया कि मेरा की जगह तेरा आ गया। तो तेरा, ये जो वह शब्द है, ये जो अंक है, ये जो गणना करना, जहाँ पे हम अनंत की गणना करना शुरू कर देते हैं, फिर हम अनेक अपनी असलियत को जानने लगते हैं। तो मेरा को छोड़ के जब तेरा पे चले जाएंगे, तो आवश्यक रूप से हमारा भारत देश वो महान देश बनेगा जो श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कल्पना की। वो कल्पनाएं जो स्वामी विवेकानंद ने रखी भारत के लिए, वो कल्पनाएं जो बेपरा शहंशाहों के शहंशाह शाह मस्ताना जी महाराज ने हमारे भारत देश के संदर्भ में की, आत्मा के संदर्भ में की, रूहानियत के संदर्भ में की, और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरी देश और दुनिया को बदलने का सपना साकार होता जा रहा है। तो देखिए, ये कर्मोन्नत परिवर्तन होते हुए, क्रांतिकारी परिवर्तन होते हुए, सूचना के क्षेत्र में, जानकारियों के क्षेत्र में, किस तरह से हमारा भारत का प्रत्येक नागरिक बहुत ही सस्ता इंटरनेट का प्रयोग करने लगेगा, प्रयोग ही नहीं करने लगेगा, बल्कि विदेशों के अंदर इसका व्यापार करने लगेगा और रोजगार के साधन बढ़ेंगे। आप देखेंगे कि ये 5G सर्विसेज कितना महान परिवर्तन पूरी दुनिया में लाती है। धन्यवाद। आपका समय जो भाई बहन सुन रहे हैं, बेहद कीमती है। कहा जाता है कि टाइम इज मनी, परंतु यदि इस टाइम में कोई एक्शन हम यूजफुल नहीं करेंगे, तो फिर हमारा टाइम मनी का फॉर्म नहीं है। इसको यूजफुल बनाने के लिए हमें अपने आप की तुलना अपने आप से करनी है। किसी से तुलना करने से हम अच्छे नहीं बन सकते, बल्कि अपने वर्तमान की तुलना अपने ही भूतकाल से करनी है। हर भारतवासी की सोच यदि इस उच्च स्तर की होगी, तो भारत का प्रत्येक नागरिक एक जीडीपी में, एनडीपी में और भारत के राष्ट्रीय उत्पादन के अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद भाइयों बहनों बुजुर्गों जो आप सुन रहे हैं। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।